Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve CAT 2021 slot 2, the afternoon slot's second RC passage. All passages from CAT 22, including RC passages and summaries of all the three sorts already uploaded. For CAT 21 also, slot 3 is done, first RC passage also done. You'll find all this in suitable playlists. So if you would like to go through previous year questions, solve them, and also simultaneously would like decent explanations of those, I strongly recommend that you go back to the channel homepage and check out the playlist there. ठीक है, तो चलो तब तक के let's go solve what this previous year question is about. Okay, before we start, please pause the video here, read the passage. I've also mentioned the timestamps of the questions in the description box as well as the comment section. You can simply go there after reading the RC passage, click on those timestamps, solve the questions, jot down the answers, and then come back here to the starting point to check out whether your interpretation, whether your comprehension is in line with what is required, what is correct or not. Okay, chalo. Then without any further ado, let's get started. In this passage, the genre is somewhere in between, let's say, linguistics. So we would be able to plot it, let's say, humanities marginally, plus some sort of general commentary. The passage is not so technical that it becomes abstract and goes kind of bouncer as generally humanities passage do. There is not a lot of technical jargon thrown away. So there is a touch of this general commentary, general affairs type. Seems like a very easy to read, maybe a weekly magazine article or something like that. Okay? I'm not aware of the actual source here. I'm just making some kind of guesswork. Anyway, coming to the passage, information given is really not a lot, very limited. So we'll walk through the paragraphs very quickly. Author says, देखो, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है that there are a lot of languages out there in the world जो documented या written form में ज्यादा नहीं है. They are very much still dependent on oral transmission. लिखते नहीं है लोग उसके अंदर. Maybe in a particular language, let's say हिमालय के regions में, maybe some tribe is living for centuries in that region only. Maybe those guys are not inclined to putting down their language in books, in some form of literature. It is passed from one generation to other in the form of oral format. People speaking it, end of story, that's it. लिखा हुआ लिटरेचर आपको ज्यादा नहीं मिलेगा. ओके, तो ऐसे लैंग्वेजेस का कंजर्वेशन इज सॉर्ट ऑफ चैलेंजिंग, ऑथर सेज. ठीक है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैव एन इफेक्ट वेदर अ लैंग्वेज सर्वाइव्स और डज नॉट. और खतरा क्या है कि अगर आपकी पुरानी लैंग्वेजेस समझ लो चले जाती है, नुकसान हो जाता है, इफ वी लूज देम, तो इट्स नॉट जस्ट सम रैंडम वर्ड्स या फिर सम पर्टिकुलर एक्सेंट और ग्रामर गेटिंग लॉस्ट. नो, वी आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग अ वर्ल्ड, रिगार्डिंग अ कल्चर. It's not just the loss of a language, it's the loss of a culture. Okay, so when elders die, livelihoods are disrupted, a language dies, so we lose multiple, many important things. Okay, now coming to the reason for the decline of languages, author says push and pull factors दोनों हैं. In the sense, कभी कभी push as in sometimes external factors which are out of our control will come and damage or have an impact on some language, or there might even be pull factors, मतलब कि within the tribe, within the community, people who have that language as their mother tongue, maybe something happens inside that community itself जिसकी वजह से वो language में decline हुआ. So what are the two parts where the author mentions what are the push and pull functionalities? तो push को हम देखते हैं. push के केस में author has said कि बाहर से कभी कभी आक्रमण होता है कोई कल्चर पे, in the form of war, famine, or even natural disasters, where maybe an entire community gets wiped out. Very unfortunate. तो unfortunately language भी चला जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर उसने author has also taken a swipe at colonists जिन्होंने तंजानिया, सॉरी माय बैड, तस्मानिया की एक लैंग्वेज का नुकसान पहुंचाया. ठीक है, ऑल राइट. देन कमिंग टू द पुल फैक्टर्स, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट इट? कि देयर आर सम पुल फैक्टर्स जिसकी वजह से एक लैंग्वेज डिक्लाइन हो सकती है. तो दैट पार्ट ऑथर इज रेफरिंग टू एज अ लैंग्वेज शिफ्ट इन डबल कोट्स, कि people speaking those that language particularly might move on in the sense कि नहीं यार हमारी लैंग्वेज का तो बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है दुनिया में, लोग बोलते नहीं है, we cannot interact with outside world with this, so they move on, they move to other places, they adopt different languages. ठीक है, and this is very common. Author says hardly कोई language है दुनिया में
जो इम्यून है इस चीज को लेकर। फ्यू लैंग्वेजेस आर इम्यून टू दिस, फ्यू मतलब नहीं के बराबर, almost nothing. Okay, and this happens sometimes voluntarily because people are moving out for better economic, better education reasons, but there can also be state coercion or neglect at work as well. तो state coercion and neglect मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश वाला एलिमेंट has also come in, कि गवर्नमेंट ऑथोरिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है उस लैंग्वेज को, वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं टैसिट वे में कि मर जाए ये लैंग्वेज, so they create an ecosystem like that. And as an example to us, there is a very intriguing example mentioned in the last sentence of this paragraph. Please keep in mind this entire paragraph is discussing how languages die. Maybe external factors, maybe internal push, pull, whatever. लेकिन last sentence is interesting in the sense जहाँ पे author ने negative बात नहीं की है. He is rather talking about resurgence of a language. Welsh, there is actually a region in Great Britain known as Wales. Okay, जो भी अगला राजा बनने वाला होता है, जनरली रॉयल फैमिली जो है इंग्लैंड की, वहां पर एक प्रथा है दैट whoever is going to be the next king, generally before becoming the king, when that guy is the prince, when the guy is the heir to the throne, after whoever is the king or queen passes away, so that person is made the prince of Wales. Okay, it's a region over there and author says कि उस region की जो ये native language है वेल्श, इसको बहुत सताया वहां की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश स्टेट ने दबाया, धमकाया, स्टिग्मेटाइज किया कि अरे ये लैंग्वेज हट, बोलो मत, इसमें बात मत करो, ब्ला ब्ला ब्ला. So after a lot of time of being put down like this, very thankfully, very amazingly, what has happened is that this language has made a solid comeback on the scene. Welsh is like बस हो गया, अब अपना टाइम आ गया है. Okay, so कहीं ना कहीं there is a sudden change in the track, there is sudden change in the tone of the author. पहले दो पैराग्राफ में there is a bit of pessimism coming in, अरे यार लैंग्वेजेस जा रही है, दुख की बात है, बाप रे, ओके. बट नाउ ही इज लाइक यो बॉस वेल्श, आई एम बैक ऑन द सीन. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है. एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ, ऑथर सेज बहुत लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को गालियां मारी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लैंग्वेजेस का नुकसान है, ग्लोबलाइजेशन इज लीडिंग टू लिंग्विस्टिक लॉसेस. लेट्स हाईलाइट दैट पार्ट. ऑथर इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन इज रेगुलरली pilloried as a major threat. Pilloried मतलब blame for something negative happening. ठीक है, as a major threat to linguistic diversity. Linguistic मतलब language से related. ज्यादा vocab का खेल नहीं है यहाँ पर, कुछ कुछ थोड़े से unusual words है, but I'm pretty sure any half decent aspirant would know, would be able to understand what is going on. Hardly ऐसा कुछ बात चल रही है यहाँ पे जो शायद आपको वर्ड ना भी पता हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर. You can clearly infer that linguistic means related to some language. ठीक है, चलो. तो लैंग्वेज वाली डाइवर्सिटी ग्लोबलाइजेशन की वजह से नीचे जा रही है, ऐसा ऑथर नहीं बोलता है. ऑथर कहता है दिस इज व्हाट पब्लिक सेज, व्हाट पीपल बिलीव, एंड ही सेज कि हट ऐसा नहीं है. ऑथर सेज बिल्कुल गलत बात, ग्लोबलाइजेशन नहीं है. ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट तो एक्चुअली मदद कर रहे हैं. जो होमोजेनाइजेशन हो रहा है ना हमारे कल्चर का, दिस इज वेयर यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड एक्चुअली बहुत अच्छे से, व्हाट इज मेंट बाय होमोजेनाइजेशन. लेट मी क्लियर अप द स्क्रीन, उसके बाद में डिस्कस करते हैं इस वर्ड को थोड़ा सा. देखो, होमोजेनाइजेशन होमोजिनस इस वर्ड से रिलेटेड है एंड इसका अपोजिट है हेटेरोजेनस. काफी बार कंफ्यूज होते हैं एस्पायरेंट्स इसमें, यू नीड नॉट बी कंफ्यूज. एक मीनिंग याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाए. होमो का मीनिंग होता है सेम और सिमिलर. ठीक है, तो होमोजीनस, अगर कुछ चीजें होमोजीनस है तो वी आर सेइंग, वी आर इंप्लाइंग कि बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, हम डिस्टिंक्शन नहीं बना सकते, कैन नॉट डिस्टिंग्विश. सो इसका मीनिंग कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है. इसका मीनिंग क्या है कि हमारी दुनिया का कल्चर, ह्यूमन सिविलाइजेशन का कल्चर इज काइंड ऑफ जीरोइंग इन ऑन वन पर्टिकुलर पैटर्न. जो डाइवर्सिटी है, भिन्नता है, वो खत्म होते
पार्डन, वो खत्म होते जा रहे हैं। हेट्रोजेनियस मीनिंग डाइवर्सिटी प्रेजेंट, डाइवर्स, कैन डिस्टिंग्विश। तो आप इन दो में से किसी को भी एक को याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, सो शुड नॉट बी अ चैलेंज, बट जस्ट इन केस अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर नॉट अवेयर व्हाट दिस वर्ड्स मीन, तो प्लीज जॉट दिस डाउन एंड नेवर एवर फॉरगेट देम। वेरी स्टैंडर्ड, वेरी पॉपुलर टर्म। तो ऐसे पैसेजेस आपके हाथ से बिगड़ सकते हैं इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट की वर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, तो ऑथर सेज ग्लोबलाइजेशन नहीं है ब्लेम के लिए, होमोजेनाइजेशन जो हो रहा है दुनिया का उसके बेसिस, उसके जो ब्लेम देना है आपको लैंग्वेज डाइवर्सिटी लॉस का, तो आपने ब्लेम किसको करना चाहिए? ब्लेम क्लियर कट मोनोलिंगुअल कल्चर के ऊपर में। and other has started taking strong, swipes at western culture, कि जो G8 कंट्रीज का ग्रुप है, इट इज एक्चुअली टुडे G7 नाउ आई बिलीव, एज फार एज माय नॉलेज गोज, रशिया हैज बीन किक्ड आउट ऑफ दैट ग्रुप, तो G7 बन चुका है। जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है दुनिया की, उनका ग्रुप होता है G8 G7। ठीक है, तो वहां पर ऑथर सेज बीइंग मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस होना उस कंट्री में, उस कल्चर में। ठीक है, ये इन बड़े कंट्रीज के लिए हैविंग सो मेनी लैंग्वेजेस, इट सीम्स वेरी अनयूजुअल टू दीज गाइस। फॉर देम ए भाई इतना नहीं होता, हम सब एक लैंग्वेज में बात करते हैं। इमेजिन करो यूएसए, ओके, वहां पर इंग्लिश ही चलना है मैक्सिमम केसेस में। देयर इज हार्डली एनी situation where you can come across where people are speaking two diverse languages very comfortably, no. So it's a case of a monolingual culture। ठीक है, एंड ऑथर सेज जो डोमिनेंट कंट्रीज है आज दुनिया में इकोनॉमिकली, वहां पर मोनोलिंग्विज्म चल रहा है। मोनोलिंग्विज्म का मीनिंग कल्चर ऑफ वन लैंग्वेज, या फिर कल्चर फोकस्ड ऑन वन लैंग्वेज ओनली। मोनो मीन्स वन, डुओ डुआ मीन्स टू, एंड मल्टी ऑफ कोर्स मतलब मेनी। तो ऑथर सेज फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ हिस्ट्री ह्यूमन कल्चर बॉस, हम मल्टीलिंगुअल थे। ओके, जो ये मोनोलिंगुअल माइंडसेट है इन डेवलप्ड कंट्रीज का, ये बहुत गलत बात है। इट इज एक्चुअली इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विथ मैनकाइंड। थ्रू आउट मैनकाइंड हिस्ट्री वी हैव बीन मोर मल्टीलिंगुअल दैन यूनिलिंगुअल। हम एक भाषा के दम पे नहीं चलता था हमारा कल्चर, बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती थी। तो ऐसे केस में हु इज टू ब्लेम? ऑथर सेज एन एटीट्यूड ऑफ मोनोलिंगुइज्म, कि एक लैंग्वेज और भाई पूरी दुनिया इस पे ही चलनी। तो पीपल हु बिलीव इन दिस कल्चर ना कहीं ऑथर सेज दिस गाइज हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नहीं नहीं हमारी लैंग्वेज सुपीरियर है। तो ऑथर सेज बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोनोलिंग्विज्म शुड बी ब्लेम्ड, शुड बी अ प्राइमरी कंसर्न when we face loss of diversity with respect to languages. Rather he is of the exact opposite opinion, he says कि इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन ये तो मदद कर रहे हैं हमारी। Globalization plus internet, as covered in the last paragraph, these are very, very helpful. Globalization and internet, they are very helpful when it comes to preserving language. And he has ended the entire narrative with a sort of poetic touch here, थोड़ा सा metaphor वाला, कि जमाने तक 5000 साल तक rise and fall of languages was related to what? The plow, sword and the book. Plow stands for किसान, मजदूर, एग्रीकल्चर, ओके, इकोनॉमी, ओल्ड स्कूल इकोनॉमी। स्वॉर्ड मीनिंग पावर, पॉलिटिकल पावर, बैटल्स, वॉर्स, जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, जिसके हाथ में ताकत है, उस हिसाब से लैंग्वेज का राइज एंड फॉल डिसाइड होता है। एंड बुक मीनिंग रिलीजन इन दिस केस, जो रिलीजन जितना स्प्रेड होगा वो खुद की किताब वहां पर लेकर जाएगा, एंड दैट कल्चर, दैट लैंग्वेज विल स्प्रेड मोर। But now, what is the case? We live in a digital age, author says, and in our digital age, who is responsible for ensuring a language survives or dies? Keyboard, screen, and the web. Meaning, हमारा modern day technology of computers and internet combined. हो गया? That's it. बहुत ही simple, बहुत ही straightforward narrative, boss. Hardly any problems over here. ठीक है? Nonetheless, if you have any doubts, please drop them in the comment section. I'll be more than glad to help you out. Till then, let's go try to solve the questions now. This is the first question. Let's take a look what the question says.
From the passage we can infer that the author is in favor of. Author किस बात को सपोर्ट करेगा? बहुत बहुत सिंपल, यहाँ पे आंसर हैज टू बी क्लियर कट, ग्रेटर मल्टीलिंगुअलिज्म. Very straightforward. Author is saying monolingualism is not good. Having one language, believing in the superiority of one language is not okay. So what is the vice versa opinion of it? Opposite opinion of it? Zyada languages, multilingual, many languages. That's it. ठीक है. Cultural homogenization, absolutely opposite. Author says ये बहुत गलत बात है. It should not be allowed to propagate. Regarding option A, author is not giving any opinion regarding language shift. लैंग्वेज शिफ्ट कहाँ लिखा है? सेकंड पैराग्राफ में, अंडरलाइनिंग दिस पार्ट ओवर हियर. ऑथर सेज ये होना ही होना है. इट इज समथिंग आउट ऑफ आवर कंट्रोल. पीपल विल मे बी मूव ऑन फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज टू सम बेटर मोर यूनिवर्सल लैंग्वेज. और इसकी जो चाल है, जो समय की ऐसी जो चाल होती है, इसको आप रोक नहीं सकते. दैट्स इट. एंड एक्सपांडेड स्टेट रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस, दिस इज नोवेयर टच्ड अपॉन इन द पैसेज. रादर इसका अपोजिट ऑथर ने कमेंट जरूर किया है कि स्टेट की वजह से, सरकार की वजह से लैंग्वेज दबती है. वेल्श को इन लोगों ने दबाया कई सदियों तक, बट थैंकफुली इट हैज कम बैक बैंग ऑन द सीन. वो बात अलग. सो नोवेयर ऑथर इज इन फेवर ऑफ दिस थिंग. ठीक है. तो चलो, आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी क्वेश्चन. स्टिल इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो. Till then, let's go and try to solve the next question. Okay. Author mentions the Welsh language to show that. Okay, very interesting question, very interesting. Author ने यहाँ पर सेकंड पैरा में क्यों बात किया वेल्श लैंग्वेज के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा है. तो एक बार इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना है. ऑथर ने हमें एक निगेटिव बात तो बताई है कि यार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस लैंग्वेज को बहुत दबाया, बहुत पीटा, बहुत दबाने की कोशिश की, बट it has rebounded with vigor. Vigor means having a lot of energy, having a lot of vitality. Very positive word. Rebounded again, एकदम comeback मारना, हीरो वापस आ गया, something like that. Okay. तो क्यों बोला ऑथर ने? Of course he wants to convey something positive. ठीक है, कि आप शायद दबाओ, डराओ, धमकाओ लैंग्वेज को, लेकिन it can make a comeback. So we want our option to be relating something positive. Okay. So immediately option A gets kicked out of the narrative because it is very negative in situation. Okay. कि efforts to integrate Welsh speakers have been fruitless, blah blah blah. Absolutely कहीं पर भी नहीं दिया है कि Welsh language बोलने वाले लोग समाज में integrate नहीं हो पाए. Hopeless, very wrong. ऑप्शन डी एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन का कोई लेन देन नहीं है इस वेल्श लैंग्वेज वाले मेंशन को लेकर, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हैज कम इनटू नैरेटिव ओवर हियर सो लेट इनटू द थर्ड पैराग्राफ. But we are concerned with the mention second paragraph के end में, where the author has been discussing the push and pull factors. तो आंसर अब बी और सी में से ये होना चाहिए. Okay, so let's take a look at what B and C talk about. They are both talking about the languages can revive, languages can make a comeback. Okay, but there is a problem in option C. It says what? The vulnerable languages can make a comeback with state effort. But वेल्श के केस में तो ऑथर ने हमको क्या बताया है कि स्टेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्टेट ने तो बहुत बैंड बजाई है उस लैंग्वेज की, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर अनमेंशन्ड रीजंस इट हैज मेड अ कमबैक. सो ऑप्शन सी goes bang opposite to what the author is conveying, and hence answer becomes option B. ठीक है. The languages can revive even after the speakers have gone through a language shift. That because of the oppression, because of the coercion by the British government, maybe some people may have left their native language and moved on to maybe, let's say, English, but still, in spite of that, after so many decades and centuries, Welsh language has made a comeback. ठीक है. तो चलो, I hope that this question is also clear to you. काफी straightforward, doesn't require a lot of rocket science. Still, if any doubts, please let me know. Okay, then let's go to the next question now. Okay. What does the question say? The author lists all of the reasons for the decline and disappearance of a language except, so very straightforward here, 3 reasons you are going to find in line with author. 3 options you are going to find which the author himself says कि हाँ यार ये चीज के वजह से languages खत्म हो रही है दुनिया में. ठीक है जी. Okay. But there is going to be one which is opposite to the author and that you have to find. So basically ये answer option is
something opposite of what the author is saying, and very clear cut, it has to be option D. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं ऑप्शन डी इंटरनेट को, कि इंटरनेट फैल रहा है दुनिया में, इसकी वजह से वी आर ऑल फोकसिंग ऑन ओनली जस्ट अ फ्यू हैंडफुल ऑफ लैंग्वेजेस, उस वजह से लैंग्वेज मरती है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ यू रीड द लास्ट पैराग्राफ क्लियरली, ऑथर इज सेइंग नहीं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, लैंग्वेजेस आर फाइंडिंग सपोर्ट, multilingualism can survive in this world because of thanks to internet. So this is opposite to what the author believes, hence clear cut the answer. ABC, you can find them mentioned in the passage in different parts. Very easy, very straightforward, and I hope that you got it correct. Okay, chalo, let's go to the next and last question now. Okay, we can infer about indigenous languages from the passage except that. अच्छा, मतलब कि once again similar to the previous question, 3 options about native languages. Indigenous language मतलब native, belonging to a particular area, belonging to a particular culture. ठीक है, ऐसे languages के बारे में 3 options we can infer from passage, मतलब 3 options in line with author रहेंगे उसकी सहमति के साथ में। एक जो है वो ऑथर के टीम का नहीं है, इट इज अपोजिट टू मे बी व्हाट द ऑथर सेज। जरूरी नहीं अपोजिट होना, बट हाँ जी, ऑथर तो अग्री नहीं करेगा, मे बी इज न्यूट्रल विद इट और मे बी इज अपोजिट ऑफ। ओके, तो क्या बात कर सकते हैं हम उसके बारे में? ऑप्शन डी हैज टू बी द आंसर। दिस इज समथिंग ऑथर ने कहीं नहीं बोला है कि यार ना कुछ ग्रामर, कुछ जो लैंग्वेज है उसका वोकैबुलरी और ग्रामर इतना डिफिकल्ट है ना कि यार मुझे वो लैंग्वेज सर्व यही नहीं करते आ रही, डॉक्यूमेंट ही नहीं करते आ रही, देन हाउ विल आई एंश्योर कि लैंग्वेज सर्वाइव करे? अरे ऐसा तो कोई बोला ही नहीं ऑथर ने। रादर रिगार्डिंग अनयूजुअल वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट्स, यहाँ पर इस लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है ऑथर ने कि जो नेटिव लैंग्वेजेस है दे आर मच मोर देन जस्ट सम अनयूजुअल वर्ड्स एंड फैंसी ग्रामर। नो, उनका एक कल्चर है खुद का, दे रिप्रेजेंट, दे स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग सो चैलेंजिंग और सो डिफिकल्ट अबाउट देयर लैंग्वेज और ग्रामर कि आप उसके रिलेटेड काम ही ना कर पाओ, आप उसको डॉक्यूमेंट ही ना कर पाओ, ऐसा कहीं नहीं बोला होता। रादर इज सेइंग थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू मॉडर्न टेक, वी कैन वर्क बेटर एंड बेटर टुवर्ड्स सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ a lot of diverse languages out there which might be under threat of extinction. ठीक है, so with that option D becomes the answer. A, B, C are completely in line with the author. Option A you can infer from the first paragraph itself, which I've highlighted in dark yellow. So yes, you can infer it, hence not the answer. B, people are increasingly working on documenting these languages. Yes, mentioned over here in the third paragraph as well as the closing remark of the passage itself. Yes, internet और लोग ज्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर में। Okay, and C, they are in danger of being wiped out as most can only be transmitted orally. Yes, there is a khatra. Clear cut, the author starts off with that remarks itself कि orality is fragile and contributes to linguistic vulnerability. Word to word mentioned है option C तो first paragraph में, hence cannot be the answer. ठीक है, तो चलो, I hope that this question is also clear to you. Very easy passage, 4 on 4, easily doable in 8-9 minutes at max. Okay, but still, if any doubts, please let me know in the comment section. More than glad to help you out. Thanks a lot for watching. If you like our content, please like, share, subscribe with your friends and other CAT aspirants. If any specific doubts regarding any VRC concept or any of the exams, please drop me a mail on this mail ID that I've highlighted over here. Till then, I'll see you in the next video. Thanks a lot. Tata. Bye-bye. Take care.